Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. 17,240 students appeared for CSS exams. 365 passed, 207 got allocation. This is CSS 2021. Your host is Ali Shahab from CSS Academy, Civil Services Preparatory School, CSPs, Islamabad. It is my honor to have Mr. Saiful Islam with us, who is the first position holder in KPK and fourth position holder in CSS all over Pakistan. So Saiful Islam has been our student, and he was in batch 41, and he took all the classes with Civil Services Preparatory School, CSS Academy. And we are very happy to introduce Saiful Islam to all the audience. Saiful Islam, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me here. It's a privilege being here after going through the process that I went through. To introduce myself initially, my name is Saiful Islam. I belong to District Karak from Khyber Pakhtunkhwa. I currently work as a policy analyst at a think tank in Islamabad. I write as a freelance journalist. I've written for PRT World, Express Tribune. I've been quoted by Foreign Policy, but that's not what I'm here for. So I'll get to the point. I gave my CSS exam in 2021 after graduating from NUST in 2020. I have a bachelor's in electrical engineering from the School of Electrical Engineering and Computer Sciences. Graduation के बाद मैं direct कुछ job के offers भी थी, लेकिन direct मैं फिर CSS के लिए ही बैठ गया because तैयारी के लिए, because obviously it's a process that requires 100% of your commitment. And alhamdulillah results में show हुआ है जो कि हमने effort academy ने भी और मैंने खुद भी अपने तौर पे put in किया और results are here. Acha, Saiful Islam, the first thing normally that appears in our mind, what was your motivation behind your CSS exams? Well, the answer to that question is quite sentimental for me, and the answer to that goes back over 12 years, back to 2009, 2010. So my father was a very influential figure in my life, like all parents are, and like all parents, he also had a dream that one of his children would go through or join the esteemed civil service. Unfortunately, he passed away in 2011, and for the next 10 years, I carried that dream and took forward that torch, internalized his sentiment and made it my own. After I graduated in 2020, it was finally the time where I stopped planning and start acting. So I, in a sense, like a lot of other CSS candidates, burnt bridges, gave up job opportunities, job offers, and started preparing for the exam. And eventually made it to a list that is perhaps much awaited by all of the country, and that too on the top part of it. So that's really an achievement. Yeah. And obviously, behind every success, there is a long struggle. The first question that appears mostly in the mind of the aspirants is the subject selection. So I believe you are an engineering graduate. Yes. So what were your subjects, and was they based on the scoring trend or just based on your knowledge that is your strength? So I was familiar with the scoring trends that were happening, but had I followed them, I would perhaps not have taken the subjects that I did take eventually. So I took IR, physics, gender studies, and US history. I took physics because I was, as an electrical engineer, I've already perhaps gone through the syllabus that the paper comprises of. Perhaps, and most importantly, electrical engineering maps directly onto the paper 2 of the physics paper. Right. IR is something that I've always been fascinated about. I read Machiavelli's The Prince when I was in 8th grade. I think it was too early, I believe. Yeah, it was. But then again, I reread it during my university life and perhaps rediscovered its meaning. And that inspired me to be a bit more realistic or move towards political realism. And that realism eventually led me to international relations. And the subject clicked, and I developed great interest in it. Eventually, I got a job because of that subject. I currently work as a foreign policy analyst because I studied IR during that process.
moving to gender studies, I feel it's a subject that was introduced when the syllabus was revised in 2016. Gender studies is a topic that is very relevant to our society right now. We see movements like Aurat March. We see all the debates that surrounds it, perhaps positive or negative, progressive or regressive. That's a different topic. But it was something that interested me. I wanted to know more about feminism's history. What are its types, waves? Because we use these words very casually, but there are meanings behind them. So perhaps the drive to learn more about gender led me to gender studies. US history was a subject that was eventually chosen because I had already chosen IR and gender studies, and the syllabus overlapped a lot with US history. So and the syllabus was quite short. So that's why I went for US history. Okay, fine. So I believe that was the mixture of your strength and scoring trend, both Yeah. of them. Right. So, Saif, what do you suggest for an aspirant when it comes to preparation? I mean, the way you start your day and the way you start preparing from day one, and how do you achieve your preparation goals? I structured my preparation in a very disciplined way. So initially, I made a macro timeline. कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने XYZ सब्जेक्ट करना है तो कौन से दिनों में करना है, फिर उसके बाद तो वो मैक्रो टाइमलाइन जो आपकी होती है वो 4 महीनों, 5 महीनों, 6 महीनों पे एक्सपैंड करती है. वंस दैट, क्योंकि शुरू में आपके पास ये होता है यू आर वेरी रेस्टलेस व्हेन यू आर स्टार्टिंग कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रिपेयर करें. लेकिन वंस यू आर इनटू इट तो आपको हो जाता है. लेकिन स्टार्ट आपने मैक्रो टाइमलाइन से करना है. आई स्टार्टेड विद इट. जब मैक्रो, वंस यू फाइनलाइज द मैक्रो, तब आप माइक्रो पे जाएं कि आपने डेली किस तरह से डिवाइड करना है. सो आई स्पेंड 2 hours रीडिंग ओपिनियन पीसेज, बट नॉट जस्ट डॉन इज लाइक द बेयर मिनिमम दैट an aspirant can go for. You have to read international media outlets, be it foreign policy, foreign affairs, Al Jazeera, New York Times, The Diplomat. There are a lot of sources that are available internationally that you can use. Because hota ye hai ki and this is like I'm sidetracking a bit, but this is important. होता ही है कि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं कश्मीर के बारे में, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि कश्मीर कब स्टार्ट हुआ था, कश्मीर का मसला कब स्टार्ट हुआ था, उसकी क्या डायनामिक्स हैं, उसका क्या हल है, 100 हल निकाल लेते हैं. पेपर में सवाल आता है कश्मीर और नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वो करें तो कंपेयर करें. तो आपने चाहे जितना भी कश्मीर के बारे में पढ़ा हो, आपको नगोर्नो काराबाख का नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते. और जब आप ये इंटरनेशनल आउटलेट्स पढ़ते हैं, IR में पर्टिकुलरली, करंट अफेयर्स में पर्टिकुलरली, तब ये आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. और वो इंटरनेशनल आउटलेट्स की वजह से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी इंप्रूव होती है और आपका राइटिंग स्टाइल भी इंप्रूव होता है. तो ये हो गया 2 घंटे ओपिनियन पीसेस, बैक टू द स्केड्यूल. उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स माई सब्जेक्ट्स जो मैंने मैक्रो टाइमलाइन में सेट किए होते थे. तो एक सब्जेक्ट एट अ टाइम मैं करता गया. आई स्टार्टेड इन जून एंड आई वॉज डन विद माई सिलेबस इन बाय अक्टूबर नवंबर. तो कोविड भी था, तो उसमें ये भी था कि एकेडमी जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी, तो वो मेरा कम्यूट का टाइम तो था वो भी काफ़ी ज़्यादा बच रहा था. तो दैट वाज हाउ आई वेंट अबाउट इट. ओके, सो आई बिलीव जिस वक्त एक एस्पिरेंट स्टार्ट करता है अपनी स्टडीज़, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो राइटिंग एसे. सो व्हाट वर योर, आई वुड से कि आपके क्या ख्यालात थे जिस वक्त एसे राइटिंग की स्किल्स जो हैं आपके सामने आई प्रैक्टिस करने के लिए. और दूसरा सवाल इसी से मेरा मुंसलिक है कि हाउ फार इज़ मेंटोरशिप नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द CS एग्जाम, स्पेशली द एसे राइटिंग एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रेसिंग कंपोजिशन. इससे मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है एंड दिस इज़ परहैप्स CSS का क्रक्स है. लेकिन उससे मुझे एक कहावत या कहानी याद आ जाती है कि नाबीना अफराद थे कुछ, तो उन्होंने हाथी का उनके साथ सामना हुआ. तो हर बंदे ने ना उसका, किसी ने दुम पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने सूंड पकड़ ली. तो जब लोगों ने पूछा कि हाथी कैसा होता है, तो हर बंदा बता रहा कि ऐसा होता है ऐसा. आप जो क्योंकि जौन सा पार्ट देखा था उन्होंने वही डिस्क्राइब कर दिया. ऐसे की भी वही नौयत है. हर जगह पे आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट एक व्यू मिलता है, डिफरेंट एक आपको इंटरप्रिटेशन मिलती है. मेरी अप्रोच ये थी कि ऑब्वियसली इंसान को पास अपनी रीजनिंग है और वो खुद सही और गलत में रख सकता है चीज़ें. तो आई वेंट टू, ऑब्वियसली मैं सर जसरा से साथ मेरा इंटरेक्शन काफ़ी था.
मैंने evaluations भी काफ़ी ज़्यादा कराई and perhaps that's the key कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें. लेकिन जहाँ तक फॉर्मेट की बात आती है तो you accumulate different sources, you contact different sources. लेकिन आपने जो eventual आपका जो वो है ना स्टाइल है वो आपका अपना ही है. आपने वो चीज़ें लेनी है which you think are relevant and just ignore the things that you feel are extra. मैंने यही अप्रोच किया and over time through a process of feedbacks, evaluation करवाता था, फिर फीडबैक मिलता, फिर evaluation करता, फिर फीडबैक मिलता, eventually एक ऐसा स्टाइल बन जाता है जो कि मेरे लिए परफेक्ट था. तो मेरी आउटलाइन जो थी वो 4 पेजेस तक जाती, 4 साइड्स तक जाती थी. नॉर्मली लोग 2 साइड्स की लिखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे रैशनल ये था कि इफ द आउटलाइन इज टू रिप्रेजेंट योर एसे देन इट शुड प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट योर एसे. तो उसके अंदर सारी एग्जांपल्स वगैरह लिखता था. एकेडमीज का आई फील एवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा रोल है. आप जितनी एवैल्यूएशन कराएं उतनी आपको अपनी क्लैरिटी आती है कि मैंने ऐसे अटेम्प्ट किस तरह करना है. सो दैट इज I feel that's my take on the role of academies in improving the results of CSS. ओके, बस इसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि एक आपका जो एक अपना एक्स फैक्टर है वो एक इंडिविजुअल अप्रोच और एक आपकी क्रिएटिविटी जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करती है. ओके सैफ, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर CSS, ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाट आई कॉल ए होलिस्टिक प्रिपरेशन. You have got other exams as well. So the question really arises, when you are done with the CSS exams, what is next? That's a very important question, and that's something that I feel very strongly about. What happens is that a lot of students give the exam and then they rely on that exam and wait till the result. उसके अलावा वो और कुछ करते नहीं हैं during the duration, बस इंतजार करते रहते हैं. Perhaps कभी कभार वो next attempt की तैयारी करना शुरू करते हैं. जब आप किसी से पूछते हैं तो कहते हैं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. And I think I personally feel, this is my personal opinion, कि that's not the right way to go about it. आपका एग्जाम हो गया है, forget about it. Explore other opportunities. ये एग्जाम इस तरह का है कि जो सब्जेक्ट्स आप इसमें पढ़ते हैं, जो चीज़ें आप इसमें सीखते हैं, वो आपको सिर्फ इस एग्जाम में नहीं बल्कि बहुत सारे और एग्जाम्स में भी काम आती है. आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज के और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गया, FBR हो गया, NAB हो गया, FI हो गया, एंड दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू. ये जो हैं ये भी इन्हीं तैयारी के ऊपर चलती हैं. अब फॉर एग्जाम्पल एंड टू रीइटरेट द फैक्ट कि आपने इसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर इंहिसार नहीं करना बल्कि आपने आगे दूसरी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी. इन माई केस, वंस आई वॉज डन विद माई CSS एग्जाम, एंड दिस इज अ पर्सनल एग्जाम्पल जस्ट टू हाईलाइट the argument that I'm making. I started studying for the GRE. I started exploring scholarship opportunities. I made it to the final stage of the esteemed Fulbright program because of the things that I had learned during my preparation. मेरा इनफैक्ट मास्टर्स का जो मैंने की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, लेकिन मेरे मास्टर्स का जो एप्लीकेशन थी वो इंटरनेशनल रिलेशंस में थी. तो एंड दैट वाज बिकॉज आई हैड रियली एंजॉयड स्टडीइंग दीज सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द CSS प्रिपरेशन. एंड इवन अगर आप और वो भी जब आप दे दें तो तब भी आपने वेट नहीं करना, आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है. आई वेंट फॉर द MOD prep. I made it to the final stage. Alhamdulillah, I got selected. And recently when I got the result, तो मेरे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि मेरे पास चॉइस थी कि आई टेक दिस वन और टेक दैट वन. माई जॉब वॉज बेस्ड, मेरी अभी रिसर्च की जॉब है, पॉलिसी के ऊपर काम करता हूँ. मैं इंजीनियर हूँ, मैं पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा हूँ. मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो CSS की तैयारी के थ्रू दे हेल्प मी लैंड इन एन ऑल्टरनेट करियर दैट अगर CSS लेट से मटीरियलाइज ना करता तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड हैव बैकअप ऑप्शंस दैट वर गुड इनफ फॉर मी टू एक्सेल इन. तो टू समराइज इट, जब आप एक एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप वेट ना करें, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटीज़. जब आप अदर अपॉर्चुनिटीज़ का एग्जाम दे देते हैं आप उससे आगे जाएं. जब तक एक का रिजल्ट आता है, दूसरे का रिजल्ट आता है, तीसरे का रिजल्ट आता है, इवेंचुअली आप एक ऐसे पोजीशन में होते हैं जहाँ के आप चूज़ कर रहे हैं रादर देन वो आपको चूज़ कर रहे हैं. सो दैट वुड बी माई टेक ऑन द होल सिचुएशन. इशू ये भी आता है बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाता है देन यू आर लाइक नाउ व्हाट, अब मैं क्या दोबारा अपने लेट्स से इंजीनियरिंग वाली या मेडिकल वाली फील्ड में जाऊं, और अगर मेडिकल फील्ड वाले में जाता हूं और मेरा नहीं होता तो क्या मैं दोबारा CSS में हूं और फिर दोबारा मेडिकल में जाऊं. ये पूरी साइकिल चलती रहती है. एग्जैक्टली. तो यू हैव टू थिंक दीज थिंग्स थ्रू एज वेल. काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो कटती जला के आ तो जाते हैं लेकिन उनको फिर समझ नहीं आती उसके बाद क्या करना है. तो वो पोस्ट CSS प्रोसेस भी एक बड़ा अहम एलिमेंट है जो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. 2 things define you: your patience when you have nothing and your attitude when you have everything. So what are your feelings when you have achieved your aim? To be honest, I feel quite relieved. It's been quite a long process, like I've mentioned, and it's been like over 10 years in the making. And to get it in the manner that
Alhamdulillah, I got a 10. I feel 1, overwhelmed, 2, honored, and 3, humbled. And it's not just me, it's my support group, my friends, my family as well, who are like extremely proud of the way things happened. I have friends who message me at night to congratulate me, and then message me again in the day that they felt really happy that I was able to achieve what I was able to achieve. And I think that defines my journey, the people that I have around me. They've played a significant amount of influence and role in my journey. My mother, perhaps the most important figure in my life. My result was possible 60% because of her efforts, 40% because of my efforts. And perhaps that's like an exaggerated ratio. शायद 80-20 हो असल में, या शायद 90-10 हो. You never know, because obviously बचपन से बड़े होते वक्त, मैं तो फिलहाल आपको सिर्फ पिछले 2 सालों की या 1 साल की बता रहा हूँ, लेकिन बचपन से बड़े होते वक्त creating that mindset, nourishing that flame in a child, पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है. So that I feel like my feelings at this moment cannot be defined, and I think it's too cliched to say that, but it is what it is, and I don't have any words to explain it to you. I believe ये मुझे उसी बात की तरफ याद दिलाता है कि when we were studying punctuation that woman without her man is nothing. So जिसको कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, जो इसको हमने मॉडिफाई करके पढ़ा था कि हर कामयाब आदमी के पीछे माँ की दुआएं होती हैं. So I believe that is what the case is. So Saif, we are coming to the final note. What is your message for the students in civil services preparatory schools, our academy? Yeah, this is something that I've internalized in myself, and I recommend to everyone who reaches out to me for help. And this is a simple statement: don't be an aspirant. And I feel like this might be a bit too radical, but the rationale behind it is quite logical. When you aspire for an exam, you make it more than it is. You start daydreaming, you start creating pressure on you. जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो आप एग्ज़ाम आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है, वो आपके लिए आपकी अगली पूरी लाइफ का डिटर्मिनिंग फैक्टर है. ऑन द अदर हैंड देयर आर क्वेश्चन ये आता है कि अगर एस्पिरेंट नहीं बना फिर क्या बनना है. फॉर दैट यू नीड टू रियलाइज़ कि सिविल सर्विस इज़ अ जॉब. लाइक आप कस्टम सर्विस में जाते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, फॉरेन सर्विस में जाते हैं, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी ही कहते हैं. तो नौकरियां तो बहुत सारी दुनिया में, सही है, कुछ की डायनामिक्स डिफरेंट, कुछ की डायनामिक्स डिफरेंट है. इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आप करते हैं तो आप इंजीनियर अगर जाते हैं तो वो कुछ कम नहीं है. डॉक्टर भी अगर आप बनते हैं तो वो भी कोई कम वो नहीं है. बिजनेसेस लोग अपने शुरू करते हैं, वो भी कोई कम चीज़ नहीं है. सो इट्स जस्ट अ जॉब. जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपने अपने ऊपर से प्रेशर हटाना है. तो टू कॉन्ट्रास्ट, एक बंदा जो एग्ज़ाम में बैठ रहा है, अपने ऐसे के एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो वो देख रहा है कि भाई मेरी अगली पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी ऐसे के ऊपर इन्हिसार है उसका. दूसरी तरफ एक बंदा बैठता है, वो कहता है कि ये पेपर है, एंड दिस इज़ हाउ आई अप्रोच्ड इट. ये पेपर है, इसमें मैंने जितना पढ़ा है, आई एम गोना पुट माई अटमोस्ट एफर्ट इनटू इट. मैं कोशिश करूँगा ये पेपर मैं ऐसा करूँ कि जो मेरी एफर्ट के मुताबिक, मेरे स्किल के मुताबिक बेस्ट हो. सो आई गिव इट माई बेस्ट. बाकी रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में हैं, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. इस सिचुएशन में होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने एफर्ट की हुई है. सही, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, और रिजल्ट्स ऑब्वियसली दोनों केसेस में अल्लाह के हाथ में. तो वो आपका एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है थ्रू आउट द प्रोसेस, और आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस इवेंचुअली. Obviously, so there is no shortcut to hard work, there is no shortcut to struggle. You have to burn like a sun if you have to shine like one. So Saif, that was really nice talking to you, and it is our privilege that you have given us an ample time and opportunity to discuss all those pros and cons that are necessary for the CSS aspirants. So thank you very much, and inshallah we shall have a meeting soon. Inshallah. So ladies and gentlemen, dear aspirants, this brings me to the conclusion of today's session with Saiful Islam, 4th position all over Pakistan. Saiful Islam was our student at CSPs Academy, Islamabad last year. And what really makes difference between an aspirant and achiever, as Saiful Islam says, is that it's your struggle, it's your hard work, it's your commitment and devotion. Remember, dear students,
Now the examinations of 2022 are also heading close. And what your responsibility is, always remember that improve your opportunities. For every hour lost now brings you a future misfortune. So far as fate and chance is concerned, remember, fate and chance only favor the prepared ones. So I would advise you to get prepared for the upcoming exams. Civil Service Academies and Civil Services Preparatory Schools under the vigilance of Mureed and Jasra is always there to guide you for that forum and obviously the successful part of it. So this brings me to the conclusion of this interview and session with Saiful Islam. I wish you all best of luck. Thank you very much.